हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम संख्याओं पर आधारित कुछ आंसर और क्वेश्चन का एमसीक्यू के फॉर्मेट में स्टडी करने वाले हैं। तो इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक संख्या के तीन चौथाई का दो पंचमूश यदि 204 है तो वो संख्या क्या है? एक संख्या के तीन चौथाई का, एक संख्या के तीन चौथाई का, एक संख्या के तीन चौथाई का दो टू अपॉन फाइव यदि 2/5 ए 204 है तो संख्या क्या होगी? एक संख्या एक संख्या संख्या समझो हम x ले लेते हैं। x के तीन चौथाई का दो पंचमूल, दो 2/5 204 है। therefore x is equals to 204 multiplied by ये न्यूमरेटर में जाएगी, ये डिनोमिनेटर में 16/6 x is equals to this is our final answer। एक हम अब दो एग्जांपल हम घनमूल और वर्गमूल से लेने वाले हैं। उसमें का पहला एग्जांपल है 1 × 9/16। इसका सॉल्यूशन हम मिलेगा 16 × 9, 16 + 9 25/16 is equals to 5/4। That's our final answer। Okay, 16 multiplied by 1 16, 16 + 9 25 divided by 16। इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो उसका न्यूमरेटर 5 आता है, डिनोमिनेटर 4 आता है। that's our final answer। Okay, next question mark divided by 169 is equals to 18/30।
question mark divided by 30 is equals to 18 upon 30. 13 cancel. Squaring both sides. Question mark is equals to 18 multiplied by 18. Therefore, question mark is equals to 224. That's our final answer. Okay, that's our final answer. अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और बेल आइकन दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।